Thank you. Thank you for this. Always a difficult one to do a session after Ranveer Singh has just left the stage. So, Priyanka, everybody's also left with him. So, we have to figure out, are we good to start? Okay. Go. May I request everyone to take their seats if you can, please. There isn't going to be a dialogue like Ranveer Singh here, so we will try to make it as entertaining. But I do have some star power from the Indian Parliament as well as some part of Tollywood or the southern part of the country. My name is Shivnath Thukral. I work with WhatsApp. I lead the public policy for WhatsApp, part of the Meta family of apps, and I do see the mention of Instagram by Ranveer Singh saying that's a great CV puller. I didn't realize that in Bollywood, Palash, that they look at your Instagram profile and you get invites for auditioning for movies, is it? I didn't realize that. It's on, I think. Hello, yeah. So that is my portfolio right now. Oh, it's not on LinkedIn, it's nowhere. Okay, I'm It's glad Insta. to hear that. Yeah. So the way we will do it is I'll do a quick context setting as to why these policymakers and why Palash with them. The topic of the session is the role of media and entertainment in making the social fabric of the country. With due respect to FICCI, I found the topic a little undefined, so we will try and define it as to what it really means for the session. With me is Shri Sanjay Seth. You talked about Sumlata ji, talked about Priyanka Chaturvedi. They're all parliamentarians. They sit in the lawmaking house of the country. Two of them from the Lok Sabha, one of them from the Rajya Sabha. Priyanka is a local from Bombay, part of the erstwhile Shiv Sena or the original Shiv Sena. And Palash is the director of Gullak, which I'm sure, show of hands, Palash? I mean, in terms of, how many people have seen Gullak on TV? All right, not bad. So that's, even I have actually. So Palash is the maker of Gullak, and my brief is to ask all of them, what is the role of media and entertainment in making the social fabric? Since Palash, you're the odd one out, I will start with you, right? You're not a politician yet. So once you become a politician, I want to ask you. Is the interaction between policymakers and Bollywood is best left apart, right? You don't want policymakers to talk to you. You don't like to talk to policymakers, I assume. And yet, a lot of the work that you do is something that is their concern. So when you uphold middle class values, when you uphold family values, it is something that they are also concerned about in their constituencies, amongst their constituents. How does this commonality drive through? Is it because you cannot escape it because you're a citizen of the country, you're also a constituent in one of their constituencies? How does this thought come around that let me make a TV series on middle class values at a time like this? So, sir, what I feel is कि being citizen of the country and also a filmmaker, it is also our responsibility क्योंकि जिस तरह का content हम बना रहे हैं, if it is on, my content was on middle class values and a middle class family. अब उनका पोर्ट्रेयल बस सही हो, जस्ट किसी तरह के सेंसेशन के लिए मैं कुछ कर दूं वहाँ पे जिसकी शायद से रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि हम खुद एज अ फिल्म मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो कहानी हम बोलना चाह रहे हैं, वी स्टे ट्रू टू दैट स्टोरी एंड अननेसेसरी वी डोंट पुट इन समथिंग विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो फॉर मी, इफ आई टॉक अबाउट गुल्लक, सो इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी अबाउट 4 पीपल एंड फादर है, मदर है, 2 उनके बच्चे हैं और काफ़ी सिंपल कहानी है. मतलब उसका एक एपिसोड है, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, परिवार बैठ के डिस्कशन कर रहा है. बट सिंपल स्टोरीज आर हार्डेस्ट टू टेल. अब इसमें हम लोग पर्पजफुली व्हाट वी ट्राई टू डू इन गुल्लक इज वी सॉर्ट ऑफ मेक सोशल कमेंट्री ऑल्सो व्हाट इज गोइंग ऑन. सो वेदर इट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स राइट, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट मदर, जो 3 मर्दों के बीच में वो एक एपिसोड है जहाँ पे वो मर्दों को सिलबट्टे की चटनी खाना बहुत पसंद है. माँ बूढ़ी हो रही है, माँ के घुटनों में दर्द हो रहा है, माँ मिक्सी लाने की कोशिश करती है और इनका कहा था कि मिक्सी क्या ज़रूरत है, हमें तो सिलबट्टे की चटनी खाना है. तो इस तरह का कॉन्वर्जेशन है, वी ट्राई टू एंगेज द ऑडियंस. लेकिन यहाँ पे शायद से वी ऑल्सो ट्राई टू स्टे लिटिल रिस्पॉन्सिबल ऑफ वॉट वी आर डूइंग. फॉर वेरी लिटिल एग्जाम्पल, एक जो लेटेस्ट सीजन था उसमें एक सत्यनारायण पूजा के ऊपर एक पूरा एपिसोड था. तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि यार कहीं भी किसी भी तरह का कोई सेंटिमेंट हर्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे. सो वी स्टे ट्रू टू इट कि हम क्या कर रहे हैं. तो हम लोगों ने क्या किया था कि
हमने एक्चुअल पंडित बुलाया था, हमने उनको बोला था यार आप बता दो क्या होता है। मेरे भी घर पे भी हुई, शादी के टाइम भी हुआ था, तो सारी चीज़ें बताओ। द होल यूनिट वाज शूटिंग वाइल द स्लीपर्स वर। और अभी ब्रह्मास्त्र में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो सारी सबकी चप्पलें बाहर थी। तो इस तरह की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, साथ में करते हैं, जो मैंने ली थी गुल्लक में। और गुल्लक में फ्रैंकली वो ज़रूरत भी नहीं थी, एक सोशल कॉमेंट्री हम कर रहे थे, हम करके निकले विदाउट बीइंग टू एग्रेसिव अबाउट इट और टू पॉलिटिकल अबाउट इट। ये डर था या सोशल कॉन्शियसनेस है? डर से नहीं करा, मतलब यू डोंट पुश बाउंड्रीज आउट ऑफ फियर और सेल्फ कंट्रोल? नहीं, मतलब एक देखिए एक प्यारा सा शो है, अननेसरी कंट्रोवर्सी करना नहीं है, एक अच्छा सा शो है, उसको देखो और खुश रहो उसमें, क्यों वहाँ पे हम उस जगह पे जाएं? Fair point. I think you make a very good point as to it's also the feeling of being responsible and being aware. Somlata ji, you come from the industry, you've been a part of the film industry, and we are also seeing a huge boom thanks to the different formats of media, etc. But the point that Palash is making, as a parliamentarian, you've done both sides now. You were a film actress, you were a part of the movies, now you're a parliamentarian. Does the role shift a little bit, or you're still in that zone where you think we should have the freedom and yet be responsible? I think being in the movie industry since the last 40 plus years, I've acted in nearly 200 movies, so it gives me a kind of perspective as to where the movie industry is standing and where they are coming from. So I think as a parliamentarian, I tend to understand their issues far more. That's what I like to think, that I look at issues from their viewpoint more than as a parliamentarian point of view. But if you want to put things into context, if you allow me 2 minutes, back in the 80s, that's when I entered the movies. If you see the films and the way the censors acted in those days, the kind of restrictions that were imposed upon filmmakers, we have come a long way. Back then, when there was all this running around trees and singing songs, and lip locks were not even spoken about, leave alone thinking of being shown on the screen. So then we had all these flowers shaking and leaves and branches and trees and stuff like that, and things were implied more than whatever was being shown. So, but now with all kinds of content available online for everybody to see, I think these kind of restrictions seem a bit silly now, because everything is anyways being viewed by people all across. So I think allow them the freedom and let them be responsible for their actions. Accountability does matter ultimately. I think where we draw lines, suppose somebody is making a film about, not a film, suppose you're watching on YouTube, there's so much of disturbing child porn out there. So you do draw a line there. You cannot show those kind of visuals in the movies, I suppose. So suppose there was nothing stopping you, who's to say how many responsible people are there like him? You will find all kinds of people jumping in just to make a quick buck, just to have a successful movie out there. So yeah, in the broader terms, there needs to be some supervision, but I'm all for freedom. That's a very delicately balanced response. I mean, you said this also, a little bit of that also, and as you should be, given that you're a parliamentarian. Priyanka, before I come to you, Sanjay ji, आपसे सवाल पूछता हूँ. पलाश आपसे थोड़ा दूर बैठे हैं और उन्होंने साफ साफ बोला कि मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए थी, मैंने सत्यनारायण की पूजा ठीक से दिखाई. आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क यू. जो ये दिखाते हैं वो ऑडियंस देखती है, ऑडियंस अच्छा रेटिंग देती है. आपको जीतने के लिए भी ऑडियंस का सपोर्ट ही चाहिए. सो इन अ वे आप मानते हैं कि इनका कंस्टिट्यूएंट और आपका कंस्टिट्यूएंट एक ही है, और इसीलिए आप जो रोल प्ले करते हैं उनको भी वही रोल प्ले करना चाहिए. शिवनाथ जी, आप देखो, पलाश जी ने कहा कंट्रोवर्सी. कोविड के टाइम में जो गुल्लक आया, और आज से 40 साल पहले आप जाओ, 40 इयर्स बैक, बुनियाद थी, हम लोग हुआ क्या, उसके बाद कोई बुनियाद बना क्या, कोई हम लोग बना क्या? ऐसा कोई सीरियल बताओ
जो 40 साल बाद भी याद किया जा रहा है। ऐसा कोई सीरियल बताओ जो परिवार एक साथ बैठ के, हमारा कल्चर क्या है कि दादा भी बैठ रहे हैं, दादी भी बैठ रही है, बच्चे बैठ रहे हैं, माँ बाप भी बैठ रहे हैं। आफ्टर 40 इयर्स बाद गुल्लक आया और गुल्लक ने पूरे परिवार को बांध दिया। आज नहीं तो परिवार में देखो क्या है, बच्चा अलग मोबाइल लेके बैठा है, मम्मी अलग लेके बैठी है, पापा अलग लेके बैठे हैं। तो पूरा हमारा जो कल्चर है परिवार का वो कोलैप्स हो जा रहा है। और कोई फियर नहीं था उनको, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, डर नहीं था। उन्होंने इंडियन कल्चर को रखकर परिवार को बांधने का एक सीरियल बनाया और हिट हो गया। क्या फियर था भाई, क्या कंट्रोवर्सी हो जाती? इन्होंने कोई बाउंड्री तो पार नहीं की। यही देश चाहता है। देश जैसा चाहेगा, दर्शक जो चाहेगा, आपको वैसे ही बनाना होगा। आप किसी पे थोप नहीं सकते। मैं वापस आता हूं इस पॉइंट पे, प्रियंका का रिस्पांस लेके। एक सामाजिक सच्चाई है, आप कह रहे हैं कि जो दर्शक चाहेगा वही दिखाना पड़ेगा। Priyanka, and this is where the interesting part about the balance between regulation or oversight versus creative freedom comes in. Role of policymakers, enabler or interventionists? Firstly, it's very interesting for me to be speaking at a FICCI forum in Mumbai because I usually end up speaking in Delhi. So being a Mumbai girl, it is really, really a happy moment for me to be speaking here on this platform. And also a reality that Bollywood reigns big, politicians come later. This hall was totally full when Ranveer was here, and after Ranveer leaving, we have to contend with the fact that there are some empty chairs. But there's good competition, you still have some people sitting. Yes, All yes, the yes. That's because they won't get No, lunch without this. It's always a good reality check, and Mumbai always brings a reality check. That is what I was trying to tell you. Now, the second part to the question that you asked me about policymakers being enablers or interventionists. I would always stand on the side of being enablers. And I would always stand on the side of creativity, creative content. You find something controversial, you have every reason to not attend the screening of that particular content. You always have the option of not logging onto that OTT platform and watching what is being said or spoken. But you also have a responsibility, like he said, that we self-regulate. Let the government not impose this upon you. Let it come from the industry. That there are some parameters that we will challenge. There are some parameters which we may not want to challenge. We want to work within those boundaries. And those who are, those who are challenging those boundaries will definitely have to be up for criticism, sides taken, sides chosen. And I must also, last but not the least, say that while policymakers are always questioned, and it is high time, policy, politics, all matter to India's creativity, a nation's creativity and its social fabric. It would also be a very thriving democracy if we hear political point of view or political stance that is taken from this side of the spectrum too. That is what thriving democracy is about. If I can push you on that one. So, in a way, are you on this forum saying that the fraternity doesn't speak up enough? I think, like he said, that I was very careful. I called Panditji to come ensure that every parameters was maintained and he doesn't get into an unnecessary controversy. So controversy is now coming because we are imposing boundaries. And when I said policymakers should become enablers, I think even the industry should come forward and say, here is where you are intervening and intruding our space of creativity. Please refrain from that. I would want to see more people come forward and talk about it, that this is where you all end, this is where our boundaries begin, and this is what our freedom of speech and freedom of creativity, thought, etc., enshrined in the Constitution should be held supreme. Not the boundaries that you all are creating by creating controversies. Interesting. To both Somlata ji and Sanjay ji. Somlata ji, first to you. This whole trend that if people certainly don't like, there's this movement about a movie, a OTT, cancel it, boycott it, don't buy tickets, it should not be shown, etc., etc. How do creative people deal with it? I mean, when they make a movie, they don't think, oh, when I make this, I will have this movement outside my house.
I really want it to happen so that people see more. I mean, it ends up hurting both sides. So how does one avoid that kind of a situation? I seriously don't know if one can avoid that situation in today's day and age and looking at the trends, but I find it a very disturbing and unhealthy trend right now, this cancel culture or the boycott culture. Coming from the film industry, again, I have to say, I know the kind of blood, sweat and tears, the passion, the thought, the hard work, and the number of people whose livelihoods depend on these films doing well, and how it affects them when, you know, things like this boycott culture affects the box office collections of any given movie. I know the heartbreaks, that how heartbreaking it can be, and I think it's definitely not fair. I mean, give them a chance. If you don't like it, like Priyanka said, don't see it if you don't like it. Don't even see it, because you do know what we have teasers, you have trailers, you know when a certain kind of movie is being made, you don't know what the content is going to be, what genre it's going to be, and what kind of sentiment it's going to represent. So if you do not like it, do not go and watch it, but do not promote this cancel culture. Do not, this is very unhealthy and I would say very, very unfair, you know, for the whole movie industry. संजय जी, आपका क्या कहना है कि जो लोगों का जो एक गुस्सा होता है किसी एक क्रिएटिव प्रोडक्शन के खिलाफ, रहना चाहिए या सरकार को बोलना चाहिए नहीं ये तरीका नहीं है, आपको नहीं देखना है मत देखिए, लेकिन इनके पास फ्रीडम है जो ये दिखाना चाहते हैं? नहीं, देखो आप, बैकवर्ड कल्चर तो मैं नहीं मानता, किंतु मूवी के नाम पर आप गलत दिखाओगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन? जस्ट आप हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ दिखाओगे, देश के खिलाफ दिखाओगे, देश मंजूर नहीं करेगा, देश आगे आएगा। आप हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति पे अटैक नहीं कर सकते हो। दुनिया के किसी देश में बताओ आप, कहीं होता है क्या? कहीं नहीं होता है। तो हिंदुस्तान के अंदर हम ये पूरी छूट कैसे दे दें कि साहब आपके मूवी के लिए अपना कल्चर बर्बाद कर दें, आपकी मूवी के लिए हम अपने देवी देवताओं को उनकी बेइज्जती कर दें? ये तो संभव नहीं है। अभी कल ही देखो आप, कल 45 यूट्यूब जो वीडियोस थे सरकार ने बैन किए, क्यों किए? देश के खिलाफ था। हम उतनी पूरी छूट नहीं दे सकते कि आप देश के खिलाफ जाओ, हमारे कल्चर के खिलाफ जाओ, वहां मेरा अटैक है। और हम कह सकते हैं कि हमारे कल्चर के अनुरूप आओ ना। हमने जैसे पहले कहा कि भाई उल्टा चश्मा हिट हो गया, बुनियाद हिट हो गई, हम लोग हिट हो गया, वैसा बनाओ ना। आप क्यों हमारे कल्चर पर अटैक करते हो? सही बात है। और देश में नियम कानून है जिसके तहत ये एक्शन लेते हैं, और जो आपने यूट्यूब का जिक्र किया वो अंडर लीगल फ्रेमवर्क। हाँ, लीगल फ्रेम पे रखो। लेकिन किसी को कहीं पे घुसने नहीं देना। नहीं, वो तो हम उसके खिलाफ है कि आप सोशल मीडिया में कह दो इसको बैकआउट करो, इसको नहीं देखना। ये तो बिजनेस टैक्टिक्स है और क्या सोशल मीडिया का मिसयूज है। चलिए, I would like to say one thing here. It's not only now that movies are being banned or whatever. If you go back in time also in our country, a movie like Andhi was banned. You know, because of the political comparisons that were made. And then there was Da Vinci Code also, you know, which was initially banned, and you know there was a lot of controversy. So it's nothing new when things tend to disturb maybe a certain political mindset. Definitely it happens. It's nothing new, but it's happening only now. It happened even earlier. या फिर you have a point. I just want to say a couple of things. दो बातें मुझे इस पे कहनी हैं। सबसे पहले तो जो बैन कल्चर की बात है कि आंधी बैन हुई, ये बैन हुई। आंधी जब बैन हुई थी तो काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उस पर आपत्ति जताई थी, खुलकर प्लेटफॉर्म्स पे बोला था, स्टेजेस पे बोला था, और उन पे किसी तरीके का अटैक नहीं आया था। उसकी वजह से केंद्र सरकार पे दबाव पड़कर आंधी पे बैन हटा था। अब हम इमरजेंसी की बात करें। इमरजेंसी के समय पर किशोर कुमार जी रहे हों, श्रीराम लागू जी रहे हों या देवानंद जी रहे हों, उन्होंने जमकर उसके खिलाफ बात की थी, मुहिम चलाई थी। देवानंद जी ने तो एक पॉलिटिकल पार्टी भी लॉन्च की थी।
वो माहौल कहीं ना कहीं एक डर के चिंता से, आज अगर कोई पिक्चर बैन हो जाएगी तो कहीं ना कहीं सब तरफ शांति ही मिलेगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी फिर से नहीं क्रिएट करनी है। एक बहुत डिफरेंट माहौल है। दूसरी बात उन्होंने यूट्यूब के बारे में कही, 40-45 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक हुए। अब ऐसे ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं हैं। कोई चाइना में बैठकर बकवास कर रहा है हमारे देश के बारे में, कोई पाकिस्तान से बात कर रहा है, तो उसको आप बैन करिए। पर ये कहना कि हिंदी पिक्चर के, हिंदी लोगों के या कोई भी और लैंग्वेज की मूवीज़ हमारे देश के खिलाफ पिक्चर बना रही हैं, हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ बना रही हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा अटपटा लगता है। तो ये जो कंट्रोल है, ये रिमोट कौन कंट्रोल कर रहा है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच इज एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज कभी कभी मुझे लगता है अगर जाने भी दो यारो इस समय पे बन रही होती, उस पर भी कंट्रोवर्सी होती। मुझे लगता है अगर प्रेम रोग जैसी पिक्चर जहाँ पे विधवाओं का रीमैरिजेस की बात करते हैं, उस पर भी शायद कंट्रोवर्सी होती। तो कहाँ तक अगर उत्सव जैसी पिक्चर बनती, उस पर भी कंट्रोवर्सी होती। तो ये थोड़ा कौन डिसाइड करता है कि क्या हमारी बाउंड्रीज हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहाना बनाकर वो चाहे पाकिस्तान और चाइना हो, चाहे इंडिया को बनाए, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर समाज को थोड़ी तोड़ देंगे, देश को थोड़ी तोड़ देंगे। अपने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बनाएगा तो कोई हो, हमारे देश का हो चाहे बाहर का देश का, उसका विरोध होगा। Before this begins sounding like a TV debate or a parliamentary hearing, which I'm pretty used to appearing in front of them, but thanks for raising this point. At least, Palash, now you know why we both are outsiders in this fraternity. But let's move the needle. I understand there is this healthy tension, which is good hallmark of vibrant democracy, and I think that's the beauty of a forum like this, that it brings together diverse views where we can talk about this quite openly. Palash, let me come back to you. Source of inspiration, middle class values. You said to me during the break that during COVID you saw only violence on OTTs, there was nothing for the kids. That was your source of inspiration. Where do you draw it from? What you see around you, the kind of political atmosphere around you, social consequences that are playing out, what drives you? Because eventually what drives you is exactly, in some ways, drives them as well, or their electability. So, when we sort of, we are planning for Gullak, तो मेरा अकेले का हाथ नहीं आया। I would like to thanks अरुणाप कुमार जो TVF के फाउंडर हैं, श्रेयांश पांडे जो क्रिएटर है, दुर्गेश जिसने लिखा है गुल्लक बड़ा खूबसूरती से। तो एक ये था कि एक मिडिल क्लास को देखने का एक जो नज़रिया है, जो हम जैसे सर भी बात कर रहे थे, पहले बुनियाद हम लोग में या मालगुडी डेज के टाइम पे जो होता था बहुत नेचुरल होता था, या फिर अगर हम सही पराजपे की फिल्में अगर हम देखें, ऋषिकेश मुखर्जी, बासुदा, तो वो मिसिंग था। या तो आप देख रहे हो कि सब छोटे शहरों में गन उठा के भाग रहे हैं, या फिर बहुत सारे कसवर्ड्स हैं, या फिर इवन जो फैमिली अगर फिल्म या उसमें भी आप बड़े कैरिकेचरिस्ट तरीके से छोटे शहरों के लोगों को दिखाते हैं, किसी के बाल कलरफुल हैं। अब मैं भी वहीं से आता हूँ, हालांकि मुझे 2007 से मैं बॉम्बे में ही हूँ, बट और हम सारे के सारे जो भी इसमें गुल्लक की जर्नी का पार्ट रहे हैं, वो सब वहीं छोटे शहरों से, मिडिल क्लास घरों से आते हैं। तो हमको लगता था हमारा रिप्रेजेंटेशन जो व्हाट आई बिलीव कि इज़ अराउंड 80 to 90% है जो ऑडियंस का, मिडिल क्लास, उनका रिप्रेजेंटेशन ही करेक्ट नहीं हो रहा स्क्रीन पे। एंड वी आर वेरी स्केयर्ड कि इतनी सिंपल सी कहानी कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा। एक एपिसोड है गुल्लक का जिसमें एक वेडिंग इनविटेशन आया है, और वेडिंग इनविटेशन में जो फादर का वो होता है ना कि आप सह परिवार लिखते हो कि विद फैमिली, तो पंगे लेने के लिए जो माँ का भाई है उसने सह परिवार नहीं लिखा है, सिर्फ संतोष मिश्रा को इनवाइट कर दिया। अब ये पूरे एपिसोड में परिवार बैठ के यही डिस्कस कर रहा है, तो ये एपिसोड है। अब इस तरह के एपिसोड को क्या लोग, जिसमें आप कोई भी बड़ा शो देखोगे जो बहुत बीट ड्रिवन होता है, प्लॉट ड्रिवन होता है, ये प्लॉट ड्रिवन ही इमोशन ड्रिवन शो है। तो हमको था कि हम लोग बस जो हमने ऑब्जर्व किया अभी तक, जहाँ से हम आते हैं, हम उन वैल्यूज़ को, हम जिस तरीके से बड़े हुए हैं उनको अगर मैं दिखाऊं छोटे शहरों को। एक था मुझे बड़ी इशू होता, सभी को होता था जितने भी लोग हम इन्वॉल्व थे, कि आप अगर पेट्रियार्की भी दिखाते हो तो आप दिखाओगे कि बड़ी फोर्स है, बाप बोलेगा माँ को कि जा चाय बना के। गुल्लक में अगर आप देखेंगे तो दोनों लड़के जो हैं वो चाय बना रहे होते हैं, माँ नहीं चाय बना रही होती, आधे टाइम लड़के घर पे चाय बना रहे होते हैं। कहीं बाप का रियलाइजेशन होता है कि यार मैं गलत था, या मैं यहाँ पे पेट्रियार्कल मेरी सोच थी, ऑर्थोडॉक्स मेरी सोच थी, वो बाय फोर्स नहीं है, वो रियलाइजेशन है।
मतलब एक पॉइंट आता है जहाँ पे माँ बाप को बोलती कि मैं जा रही हूँ और तुम घर सफाई कर देना, और बाप ये नहीं बोलता कि मेरा काम नहीं, बाप बोलता हाँ हाँ मैं कर दूंगा। तो ये अब इसकी, क्योंकि हमने अपने घरों में ऐसे ही देखा है कि जहाँ पे कुछ चीज़ें शायद से हमारे जहन में इनग्रेन थी, जो हमारी लर्निंग थी उसको अनलर्न करना, और वही हमने किया कि हम गुल्लक में यही करते हैं। कहीं भी हम ऐसा मतलब फोर्सफुली किसी चीज़ को कैरिकेचर बना के, या अगर पेट्रियार्की पे बात भी करनी है, अगर एक विमेन या फेमिनिज्म के एक इशू पे बात करनी है, तो बस एक्टिविज्म नहीं करेंगे वहाँ पे, जो हमने देखा हम वही बताएंगे। My instinct to go back to asking controversial questions keeps coming back, so I will again revisit that instinct. Sanjay ji, social progress is also the responsibility of what he was just talking about, showing patriarchy in a different way, women's empowerment, emancipation. Some people may say, no, our tradition is not women can go out and work. So then, to the question Priyanka was asking, who decides? What he's trying to do is actually pushing the boundaries, change people's mindset that, no, it is not the woman's job to clean the house. It is also the man's job to clean the house. Are you comfortable with that? आप सहमत हैं? नहीं हैं? हाँ या ना कुछ तो बोलिए। ये भी कंट्रोवर्सी है, इसमें भी कंट्रोवर्सी है। How can women's progress be controversy? पलाश ने जैसा कहा ना, I'm not putting in a spot, so please, but go ahead. पलाश ने जो कहा ना, वो पूरी तरह एक इंडियन फैमिली को लेकर और पूरे परिवार को बांधकर उसने एक बढ़िया डिश तैयार किया, परोसने का काम किया। और आप पूछो उनसे कि कैसे पंचायत हिट हुई। आज पंचायत घर घर पहुंच गया कि नहीं पहुंचा? और पंचायत में आप देखो, आपका दर्शक कौन है? हिंदुस्तान में दर्शक कौन है? गांव में रहने वाला भी दर्शक है। आप उसको कैसे रोक सकते हो? आप उसके सेंटिमेंट को कैसे रोक सकते हो? करोड़ों की संख्या में जो दर्शक है, हमने जैसा पहले कहा कि आप कोई अखबार छापते हो, रीडर्स जो पढ़ना चाहता आपको वही छापना होगा। तो दर्शक जैसा देखना चाहता है फिल्में, सीरियल आपको वैसे ही बनानी होगी। इसका एक रिवर्स आर्ग्यूमेंट है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट सोमलता जी, आई मीन द क्वेश्चन, लेट मी आस्क यू, the role of media and entertainment is also to push certain boundaries which leads to progress, social progress. I think the example that he cited, Sanjay ji has a different view to it, but conveying certain elements which indicate maybe society is moving forward, leading to greater equal responsibility, etc., must be shown, or again one should just be careful of not leading to controversy. I think this takes us back to a very basic question. Did the egg come first or the chicken? So does life imitate art or art imitates life? I have a take on this, might not, everybody might not agree with it. I think films just, if you're talking about just movies and maybe the entertainment industry, they cater to the times and the tastes of the audience and, to a certain extent. So if movies like Pushpa and KGF are doing so well, even Vikram, you've seen the content, there's a certain amount of gore and violence in them. Now, I'm nobody to sit here and dictate to 1 billion Indians, do not watch this. It's what they are liking, and definitely movies are commercially driven. Let's not fool ourselves, that we are going to contribute something to, building the social fabric of the nation is a very big word to use in movies context. We are here to entertain and maybe raise a few questions, awaken something in you which was not there earlier, make you realize a few things if you're a smart movie maker. But otherwise, the role of media, if you're talking about the entertainment media, is just to entertain. That's what I feel. And see, Gandhi was made, doesn't mean we had a few crore of people who became like Gandhi.
So even the negativity is the same. I don't think you can influence people that way. Now coming back to the topic which we were discussing earlier informally, I would say today social media is far more influential than anything else, and the news media, which is constantly also in some cases agenda driven, I feel, drives a certain kind of news in a certain kind of manner, which influences certain minds. So I would say please leave the entertainment industry alone. Priyanka, leave them alone or not kind of play that leading role of some responsible changes? No, I would say leave them alone. They'll find their balance soon enough. What doesn't, become a hit, gives you a reason to analyze why it's not a hit, why it's not popular. Today, Gullak is popular. He's realized that's the niche that he's found. That's the space he's found, and that is why it's doing well. If, let's say, one series does not do well, they will analyze it themselves. Perhaps the OTT platforms will not produce such content. But let them find the balance. Let's not be this overarching, intrusive idea of policy making that will give them direction. Now, for example, I was just talking to him. I said when I was a child, I used to watch programs like Udaan. Udaan was about this young girl who goes on to become someone very important in the police force. And that gave me an idea to push boundaries within my family. I thought, why should I be content going, getting married into a family and not being an economic contributor to my nation? So those are things which push those boundaries, that idea, that mindset कि ये हमारा cultural mindset है, हम इसी पे बने रहेंगे. You have to push. How you push it is something, allow the content creators to do that. Right. And some changes need to happen. Societal changes become easier when we are all on the same platform. We are enabling them to create such content. Palash, you have a point to make? So in fact, इसी तरह का ना गुल्लक में एक episode भी है, latest season में, which talks about there's a girl who had come to Mishra's and उनके father लेके आए हैं और वो चाहते हैं कि तुम इसकी जो एक अगुवा करके कॉन्सेप्ट होता था जहाँ पे एक फैमिली का हेड जो है आगे बढ़ के शादी करवाता है या रिश्ते से, जो हमारे घर में कोई एक मामा कर रहा होता है, फूफा कर रहे होते हैं. तो वो लड़की आई है. अब ये मिश्रा परिवार उस लड़की की शादी और एक लड़के वाले आए हैं. कुछ ऐसा ख़राब नहीं है उस लड़के में भी, उस फैमिली में भी, लेकिन लड़की को कहीं से डाउट आ जाता है उस पर. और पूरा एपिसोड अब इसी के ऊपर है कि जब किसी लड़के को डाउट आता है तो लड़का बहुत इजीली बोल देता है कि मुझे इस लड़की पे डाउट है और मुझे शादी नहीं करनी है, वो एक्सेप्टेबल है ये नॉर्म. बट अगर लड़की को डाउट आता है तो वो भी उतना एक्सेप्टेबल होना चाहिए. द होल एंटायर एपिसोड इज़ अबाउट दिस, जहाँ पे मिश्रा परिवार को एंड में रियलाइज़ होता है कि यार हम गलत जगह स्टैंड कर रहे थे. तो एज अ फैमिली स्टैंड अपना एक वो लेती है स्टैंड कि नहीं, हम इस शादी का पार्ट नहीं बनेंगे. और वो उसको फ़ोन करके बोलते हैं कि यार हम नहीं बनेंगे, आपको करवाना करा लो, बट वी डोंट थिंक सो इट इज़ राइट बिकॉज दिस गर्ल हैज़ डाउट एंड वी स्टैंड विद हर. सो अब ये पूरा एपिसोड है जहाँ पे हम वी ट्राई टू पुश द बाउंड्री. इस बात से तो आप सहमत हैं कि जो समाज के जो अच्छे पहलू हैं जिसमें कि लड़की की आवाज़ सुनाई जानी चाहिए, वो उससे तो आप सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल. वो एक समाज का एक उस पहलू को वो आईना है, समाज का एक आईना है. देखो हम एक बात बताते हैं, आप 60s का देख लो, 70s, 80s, इवन 90s, उस समय क्या मनोरंजन नहीं होता था, फिल्में नहीं बनती थी, उस समय गाने नहीं होते थे. अभी हाल के 15-20 वर्षों में लोगों से पूछ लो तो फिल्मों के नाम नहीं याद हो, गाने तो छोड़ दो. अब 70s, 80s के फिल्मों के गाने और फिल्मों के नाम आदमी के दिमाग में है. क्या उस समय मनोरंजन नहीं था? तो उस समय का एंटरटेनमेंट और आज के एंटरटेनमेंट में बहुत फर्क आ गया है. आज तो कहते हैं ना, तुरंत परोसो तुरंत खाओ, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट. वो चलने वाला नहीं है. आज किशोर कुमार गाने, रफी के गाने, मन्ना डे के गाने आज भी लगता है कि अभी के गाने हैं. 1962 में लता दीदी ने गाया था मेरे वतन के लोगों, लगता है कि आज ही वही है, आज भी वही है. संजय जी, ये तो एक समाज का दूसरा पहलू है कि एक यंग जनरेशन भी ओल्डर जनरेशन के साथ रहेगा. उनका अप्रिसिएशन शायद इंस्टाग्राम पे होता है, रील्स के जरिए होता है, शॉर्ट वीडियोस के जरिए होता है. पंकज, डू यू हैव टाइम फॉर एनी क्वेश्चंस और वेयर्स पंकज? आई कांट सी पंकज. टू द ऑर्गेनाइजर्स, मैम, डू वी हैव टाइम फॉर एनी क्वेश्चंस? हेलो मैम, डू वी हैव टाइम फॉर एनी क्वेश्चंस, ऑडियंस क्वेश्चंस? और oh, I'm standing between lunch and them, right? Yeah, okay. So let's take So some let more me just wrap it up so that I know everybody needs to head out for lunch as well.
very quickly, starting with you, Palash, the word social fabric, I started by saying that we should try and define. To you, what is that clear definition of social fabric that you would like to uphold? What we have done till now, जितना short span में जो मैंने काम किया है, तो social fabric अगर परिवार भी मैं लूँ, family भी एक social fabric का एक छोटा सा unit है, और किसी तरीके से उस family के बारे में अगर हम बात करते हैं, वो कितनी rooted है, क्या हम किसी तरीके से on screen भी, off screen भी परिवारों को साथ में ला सकते हैं. We tried doing that by staying true to the content and also giving them modern storytelling. जैसे मैं पारिवारिक ना बहुत इजीली बोरिंग हो जाता है अगर उनको आउटडेटेड कहानी तरीके से मैं सुनाऊंगा. स्टोरी टेलिंग का स्टाइल भी अब इवॉल्व हो रहा है काफ़ी. तो गुल्लक ट्राइड सेम कि यार उनको इसलिए गुल्लक का बहुत बड़ा ऑडियंस इज ऑल्सो वेरी यंग ऑडियंस. छोटे छोटे बच्चे हैं, 20s में 30s में. सबसे ज़्यादा मैसेजेस जो मुझे आते हैं पर्सनल DMs आते हैं वो 20s और 30s में ही हैं, जो शायद से करियर के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, किसी के अपने पेरेंट्स के साथ कुछ अनबन है. अब इस तरह के अगर हल्के से भी मैसेज या एक मैसेजिंग हमें मिलती है कि विच इज दे आर सॉर्ट ऑफ इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली. तो गुल्लक ने वो किया एक्चुअली करंट टाइम्स में. Somlata ji, definition of social fabric for you. Definition of social fabric for me would be not just, of course, family values come first in any society, but also the compassion, empathy, respect, and a sense of responsibility towards society. I would call that the basic fundaments of any social fabric. Sanjay ji? हाँ, समाज के प्रति जिम्मेदारी और एक बाउंड्री होनी चाहिए. उस बाउंड्री को लांघने की किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए. Priyanka? I mean, last word. I mean, to a Mumbaikar, I cannot not ask the Mumbaikar. So for me, social fabric is what Mumbai stands for, and how Mumbai depicts it through its content. Whether we look at Lagan, whether we look at Pink, we look at Thappad, we look at various new movies, new age movies, which have broken those boundaries, spoken about inclusivity, spoken about respect for all and harmony in the toughest situation possible. So what Mumbai defines for me is a definition of how I would want to see the content. Fantastic. Ladies and gentlemen, parliamentarians and filmmakers all together, social fabric to me is diversity. So thank you so much for joining us, and I believe now lunch should be served. Thank you, everyone. Thank you. One group picture, please, before, yes. So, ladies and gentlemen, with that, we conclude this session.